अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन लिख दें। अगर कुछ नहीं आता, बाय चांस कह रही हूँ, तो आप जो है थोड़े ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ये थोड़ी सी कोटेशंस देख लें, दो आपने इस क्वेश्चन में ऐड करनी है। मैं ऐड करना भूल गई थी तो मैंने स्टिकी नोट से यहाँ पर अटैच कर ली थी। पीपल हु ट्राई टू हैंग आउट ऑन देयर इंडिविजुअलिटी always come to the bad end। आगे देखें, लॉजिक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बट इट कैन बी अ डेंजरस सम टाइम। लॉजिक, अब सब लोगों ने यही लॉजिक लगाया कि सब जो हैं डायनासोरस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमें भी हो जाना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए था। समटाइम्स इट कैन बी अ डेंजरस। द डायनासोरस एज एन अब्सर्ड प्ले। सबसे पहले देख लें कि अब्सर्ड प्ले की जो डेफिनेशन है, अब्सर्ड प्ले का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या होता है। थिएटर ऑफ अब्सर्ड वॉज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। दूसरी जंग के बाद जो है थिएटर ऑफ अब्सर्ड इस तरह के प्ले लिखे गए फ्रॉम फ्रांस। दिस टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय मार्टिन एस्लिन, अ क्रिटिक, इन दिस बुक द थिएटर ऑफ अब्सर्ड व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1961। इट रेफर टू द वर्ल्ड absurdity used by French philosopher Albert Camus in his essay Myth of Sisyphus. It was written in 1942. In this essay, he discusses the meaninglessness and absurdity of human life. The theater of absurd became popular from 1960s to 1970s, not only in the France but also in many countries. People far away themselves from religion due to the traumatic environment after the World War II. Hopelessness was there in the human heart and life as well. Meaninglessness and hopelessness gave birth to the theater of absurd. ये सारा कुछ theater of absurd के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। Characters of the absurd don't have enough words to say. The repetition of words and phrases leads the audience and the readers to misunderstand characteristics of an absurd play. No story, no plot, no characterization, neither beginning or nor ending, unless dialogues or regular language. The Rhinoceros is a famous play by Eugene Ionesco. It belongs to an absurd theatre and shows how people lose their individuality when they blindly follow others. This play drew criticism on the rise of the fascism and group thinking in society after the World War II. ठीक है, fascism पे ये जो प्ले क्रिटिसाइज करता है, पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिशियंस पे जो है ये क्रिटिसिज्म कर रहा है। स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल यूरोपियन टाउन वेयर द पीपल आर वर बिजी। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक स्मॉल यूरोपियन टाउन से, जहाँ पे लोग बिजी थे फॉर इन देयर डेली लाइफ वर्क्स। द मेन कैरेक्टर बेरेंजर इज़ अ सिंपल मैन हु ड्रिंक्स अ लॉट एंड डोंट केयर अबाउट हिज जॉब। वो बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स लेता है, लेकिन अपनी जॉब के बारे में कोई ख्याल नहीं है कि मेरे जॉब से निकाल दिया जाऊँगा, नहीं। ऐसा ही आदमी था ये, लेकिन इसने क्या किया पूरे नावल में, फिर क्या किया पूरी स्टोरी में, कि ये जो है रिमेन ह्यूमन रहा, अकेला। he just save his individuality and he just tried to become a human। ठीक है, ये ओनली वन था जो कि ह्यूमन रहा, बाकी सारे डायनासोरस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। डायनासोरस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन absurd play. Absurd play are often funny and confusing because they show the meaninglessness of life. In the Rhinoceros, people suddenly turning into rhinoceros. This strange event shows how people lose their individuality and blindly follow others. In the absurd play like the Rhinoceros, there isn't clear story or traditional plot, even don't follow a logical orders, and things happen randomly. For example, people turning into rhinoceros doesn't make any sense, and the play doesn't explain why it's happening. The randomness shows how life can sometimes feel chaotic and meaninglessness. The characters in Rhinoceros doesn't have deep personalities and backstories. They are ordinary people who act in a strange way instead of focusing who they are. This play uses them to show ideas like how people blindly follow others and lose their individuality. This play doesn't have proper beginning or ending. इसकी कोई proper beginning or ending नहीं थी. It begins with too much explanation and it ends without a clear resolution. For example, this play starts with people turning means living their normal life but doesn't explain why and how the rhinoceros transformation begins. It ends with Bringer shouting that he wouldn't give up, but it doesn't say what will happen to him. पता ही नहीं है हमें क्यों लोग राइनोसोरस बनने लगे. This open endlessly leaves the audience wondering, just like life offer doesn't give clear answers. Beranger realized that he is the only human left, and in the world full of rhinoceros, he struggles with his thoughts and decided to stay true to himself. He shouts, "I will never give up. I will remain human." It shows his determination to keep his individuality and humanity. I am the last man left, and I will stay that way until the end. ये आपने कोटेशन लाजमी याद करनी है, ठीक है. The conversation between characters in Rhinoceros seems to silly and pointless. The characters argue about the unemployment things.
अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, लोग जो हैं फजूल सी बातों के पीछे घंटे घंटे लगा रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल स्पेंड टाइम आर्ग्यूइंग वेदर द राइनोसोरस वाज फ्रॉम एशियन और अफ्रीकन, लाइक वाइट था या फिर ब्लैक था, विच डजंट मैटर अ लॉट। दिस शोज हाउ ह्यूमन समटाइम्स वेस्ट टाइम ऑन अनयूजुअल थिंग्स इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद important ones. So ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ अपसेट की। द लैंग्वेज इन द प्ले इज स्ट्रेंज, समटाइम्स इट्स रेपिटेटिव एंड समटाइम्स इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. The irregularity shows how communication can break down when people face confusion or absurd situation. For example, characters repeat the same ideas or talk in circles, which make it hard to understand each others. This highlights how language can fail to express the real emotions and explains what's happening. A conclusion देखें, Rhinoceros is the perfect example of the absurd play because it breaks all the usual rules of storytelling. It doesn't have a clear story having deep or a proper beginning and ending. The dialogue is often meaningless and language is strange. All characteristics shows the absurdity of life and human behavior. Message इसका देख लें, very important message ये लास्ट में लिखना आपने. Rhinoceros teaches us to stay strong. Rhinoceros में क्या है कि आपने हमेशा मजबूत रहना है, ताकतवर नहीं भी हैं तो मजबूत लाजमी नहीं. इन आवर बिलीव्स प्रोटेक्ट आवर इंडिविजुअलिटी, जो आप कह रहे हैं आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, ना कि जो लोग कह रहे हैं उस पर यकीन कर लें. एंड नॉट फॉलो द क्राउड जस्ट बिकॉज एवरीवन चूजिंग और एवरीवन इज डूइंग. सिर्फ इसलिए ना फॉलो कर लेंगे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, नहीं. अगर आपको एक चीज़ अपनी ठीक लग रही है तो उस पर डटे रहें. दिस प्ले स्टिल रेलिवेंट टुडे बिकॉज इट हाईलाइट्स हाउ सोशल प्रेशर कैन चेंज पीपल. अभी भी ऐसा होता है, लोग करते हैं फॉलो, लोगों को पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं. इट टीचेज अ स्टेट डिपेंडिंग वंस यूनिकनेस इज वाइटल इज इम्पॉर्टेंट इवन व्हेन द इंटायर सोसाइटी अपोज यू. सो आई एम डन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.